Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 4 of your social 5 books, that is history, and today I am going to deliver its 7th lecture. Before we move on towards the main lecture, let's quickly recap what we did in the previous one. So quickly tell me that why did Gandhara civilization has so many languages and how were its art and architecture influenced by different cultures? Pause the video and quickly tell me. वेरी गुड, क्योंकि टाइम टू टाइम यहाँ इन्वेडर्स जो हैं वो डिफरेंट थे, मुख्तलिफ सिविलाइजेशन जो हैं टाइम टू टाइम यहाँ इंट्रोड्यूस होती रही. सो जो मेन गंधारा सिविलाइजेशन है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय और इट इज़ अ blend of so many different civilizations. Okay, my dear students, so now let's quickly move forward towards an activity. So अब activity क्या है कि ask the students to name the some of the famous leaders who played vital role in the creation of Pakistan. So my dear students, quickly pause the video and tell me some of the great leaders जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में हमारी मदद की थी. Very good. कायदे आज़म, फातिमा जिन्ना, इलामा इकबाल. इसके अलावा आपने पढ़ा था कि कुछ नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ थी विच ऑल्सो प्लेड देयर पार्ट, लाइक दीवान बहादुर सिंह SP एंड अब्दुल कयूम खान, मिर्ज़ा अली खान, खान अब्दुल गफ़ार खान. सो दीज आर सम प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द पाकिस्तान, यानी कि हर प्रोविंस से मुख्तलिफ लीडर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की. सो माई डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंसेस इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. आज हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की क्या कंट्रीब्यूशन थी इन मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, वी विल डिस्कस दैट. So my dear students, let's get started with the by refreshing the knowledge. So quickly tell me that what do you know about the contribution of Punjab in the creation of Pakistan? So my dear students, Punjab province की क्या जो है वो रोल था पाकिस्तान को बनाने में? वेरी गुड. ये हम प्रीवियस जो क्लास है आपकी ग्रेड 4 में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी प्रोविंसेस थे विच आर नाउ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जब रेफरेंडम हुआ था और पूछा गया था हर इलाके के लोगों से कि आप किस मुल्क का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, दे ऑल वोटेड फॉर पाकिस्तान एंड दैट्स हाउ दे बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. Okay, my dear students, now I request you all to please open the role of Punjab in the contribution in making of Pakistan. Quickly open the page. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Punjab. The political awakening for separate identity among Muslims started in 1906. With the formation of Muslim Majority Party, it first started the Bengal and then got strengthened in Punjab. In 1926, the Muslim leaders in Punjab decided to reunite Muslims on a single platform. For this purpose, the Punjab Provincial Muslim League was reconstructed. So my dear students, अगर हम बात करें पंजाब के रोल की, तो आप देख सकते हैं कि जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई कि पाकिस्तान और हिंदू जो हैं, मुसलमान और हिंदू जो हैं, ये दो अलग अलग कौमें हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ था कि पाकिस्तान बनाने के लिए ये कोशिशें तेज़तर होती गईं और बंगाल से शुरू होकर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, ये हर एरिया में फैल गई. और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी वहाँ वहाँ ये स्ट्रेंथन होती गई और लोगों के दरमियान ये शऊर उजागर होता गया. उनको ये बात समझ आती गई कि हम जो है हिंदुओं से बहुत मुख्तलिफ हैं और हमें जो है एक अलग मुल्क जो है वो हमारे लिए होना चाहिए. Sir Muhammad Shafi headed it along with Allama Iqbal, Rahmatullah alayh, as its general secretary. These prominent leaders of Punjab also played a vital role in the return of Jinnah from England in 1937. In his address of Allahabad 1930, Allama Iqbal gave the idea of separate homeland for Muslims. This idea was practically presented in Lahore Resolution in 1940. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हर एरिया के जो लीडर हैं, अब पंजाब के जो लीडर्स हैं, उन्होंने इस कोशिश को तेज़ किया, मुख्तलिफ जो है उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस की और लोगों के दरमियान जो है ये शऊर उजागर किया कि आप जो है वो हिंदुओं से अलग हैं और आपकी एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है और अपने कल्चर और रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक अलग मुल्क चाहिए. तो जैसे ही मुसलमानों को, बरे सगीर के मुसलमानों को ये बात समझ आती गई,
तो पंजाब के लोग जो हैं उनके दरमियान ये कोशिश तेज़तर होती गई और फिर उन्होंने बहुत जद्दोजहद की और पाकिस्तान को हासिल किया। इसके अलावा जब कायदे आज़म इंग्लैंड थे तो इलामा इकबाल ने बहुत कोशिश के बाद, क्योंकि इलामा इकबाल जो है ही वाज बोर्न इन सियालकोट और वो पंजाब के एक इलाके का हिस्सा था, तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि कायदे आज़म को वापस लाया जाए। और क्योंकि कायदे आज़म एक ऐसे लीडर थे जो कि तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकते थे और इलामा इकबाल ने ये चीज़ देख ली थी उनके अंदर, तो इसी तरह से ये कोशिशें तेज़तर होती गई और ये पंजाब का रोल था इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। In elections of 1946, the people of Punjab voted for All India Muslim League and indicated that they are supporting the demand of separate homeland, that is Pakistan. So my dear students, जब 1946 में रेफरेंडम हुआ और पूछा गया कि आप किस पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं या मुस्लिम लीग के साथ हैं, तो पंजाब के लोगों के मैक्सिमम वोट्स जो थे दे वर विद द मुस्लिम लीग, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा था क्योंकि मुस्लिम लीग का एक ही फिलॉसफी थी दैट वी वांट अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो उन्होंने इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया बाय वोटिंग द पार्टी और इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो हासिल किया गया। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव पार्टी इन सब कॉन्टिनेंट। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये मुसलमानों की तर्जुमान पार्टी थी सब कॉन्टिनेंट में, बरे सगीर में। So now we will study about the role of Khyber Pakhtunkhwa in the creation of Pakistan. Khyber Pakhtunkhwa. The old name of Khyber Pakhtunkhwa was Northwest Frontier Province. Haji Sahib Torangzei was one of the leaders of NWFP, currently KP, who fought against the British rulers. He, along with the Ghaffar Khan, Bacha Khan, also paved the way for education and social work. They established 120 schools in few years. In addition to that, Sir Sahibzada Abdul Qayyum laid the foundation of Islamia College, Peshawar in 1913. These institutions educated the people of NWFP towards separate homeland, and they welcomed Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah their times with great zeal. The people of NWFP were given the right to decide whether they wanted to be part of India or Pakistan. The referendum was arranged and polling started on 6 July 1947. Bribed British government, 99 votes were cast in favor of Pakistan and less than 1 vote for India. Hence NWFP became part of Pakistan. So my dear students, इस तरीके से बहुत से लोग जो हैं इन्होंने KPK के ये वो लोग थे, जैसे कि हाजी साहिब तौरंगज़ई, और ये वो लीडर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत जिद्दोजहद की और इन लोगों ने ऐसे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बनाए जहाँ पर लोगों को ये तालीम दी जाए, उनको ये बताया जाए कि आप जो हैं वो इंडिया का पार्ट नहीं है, आप हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, बल्कि मुसलमानों को एक आज़ाद मुल्क की ज़रूरत है। दे नीड अ सेपरेट होमलैंड टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, देयर कल्चर एंड एवरीथिंग। सो इसी तरीके से इन्होंने कायदे आज़म को जो है बहुत दफ़ा वेलकम किया केपी में, यानी कि पुराना नाम इसका NWFP है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो यहाँ पे इनको बहुत दफ़ा वेलकम किया गया और कायदे आज़म की आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया गया। इसी तरह जब 6 जुलाई 1947 को जब रेफरेंडम हुआ और ये वोट पूछा गया उनसे, हक के राय होती है ये कि आपसे पूछा जाए कि आप किसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो 99% ऑफ पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा वोटेड इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान और सिर्फ 1% वोट जो है वो इंडिया की फेवर में गया था। एंड दैट्स हाउ खैबर पख्तूनख्वा बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। So my dear students, what was the role of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa in the creation of Pakistan? A lot of leaders from these areas supported the ideology of a separate homeland, and when the votes were casted, majority of the people of these areas voted in the favor of Pakistan, and that's how this is the part of these areas, these provinces in the creation of Pakistan. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. Write down your name and your class and then start working. Fill in the blanks. Role of provinces. The political awakening for separate identity among Muslims started in 1906. In dash, the Muslim leader in Punjab decided to reunite Muslims on a single platform in 1926. In his address of Allahabad, dash and dash gave the idea of separate homeland for Muslims. 1930, Allama Iqbal.
In elections of Dash, the people of Punjab voted for All India Muslim League 1946. The old name of Khyber Pakhtunkhwa is North West Frontier Province, that is NWFP. Dash was the leader of NWFP, currently KP, who fought against the British rule. It is Haji Sahib Aurangzeb. 99% votes were cast in the favor of Pakistan. Sir Sahibzada Abdul Qayyum laid the foundation of Islamia College, Peshawar in 1913. So my dear students, quickly pause the video and complete the worksheet. For dates and their confirmation, you can again go back to the book and you can check the dates. Let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do question number 6 from section B. Discuss the role of Khyber Pakhtunkhwa in the creation of Pakistan. And my dear students, all the provinces were in the favor of Pakistan, and that's how they became the part of Pakistan. So my dear students, I hope you have enjoyed the lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.